Finally, I would add that Rajasthan plays a pivotal role in the Mahindra Group's sustainability missions. We have developed 4 large-scale solar projects in Rajasthan already and are actively pursuing various opportunities to do a lot more in renewable energy here. Our success in Rajasthan would not be possible without consistent support from the government, which has prioritized ease of doing business above all else. For the Mahindra Group, on every occasion, Rajasthan has committed and delivered. I thank you once again for your hospitality, acceptance, and support that you've accorded us over the years, and we look forward to continuing this partnership. Thank you. Thank you, sir, for your contribution and commitment to the state of Rajasthan. And now inviting Mr. V. Santanam, the CEO, Asia Pacific and India region, and the chairman of St. Gobain, India, for his address. Honorable Chief Minister, Shri Ashok Gehlot Ji, distinguished guests, senior government officials, it's indeed a proud privilege for us to participate in this Invest Rajasthan. And I'm going to say a few words about our experience in Rajasthan. A decade plus ago, we hadn't even thought about Rajasthan as a potential place for investment. I do fondly recall that then Mr. Ranka, he was in charge of the industrial promotion, he had come and made a special visit in Rajasthan. And Honorable Chief Minister, you'll be happy to know that and 15 months ago, right in the middle of the Delta pandemic, our Honorable Chief Minister convened a meeting with us. I do fondly recall, he said that, why are you not considering investment once again? Because at that point in time, the whole world was in a gloomy period. There was pandemic. I said that we'll give everything that you need in order for you to make the investment. And that particular commitment and the fact that historically Rajasthan has always delivered whatever it has promised, made us reinvest again in Rajasthan. We signed our second MOU. And you'll be very happy to know that that 1,200 crore investment, which is just conceived in 15 months ago, will be fructified in the next 9 months. So by March, that particular new investment of 1,200 crores will be commissioned. So that's really the power of what both Saint-Gobain and Rajasthan coming together. There is very solid mutual commitment. There is solid mutual delivery. Firstly, the people of Rajasthan, I think extraordinarily humble, extraordinarily relationship oriented, but at the same time very highly productive. You'll be happy to know that the plant in Bhiwadi that we have is amongst the top 3 plants in the world in terms of productivity, energy efficiency, sustainability, and output. And we have over 30 such facilities all over, from China to Brazil to Europe to America. So that is really the power of the people of Rajasthan, and they've been extremely productive and enormous value addition to not just the country, but also to our companies. The second P that comes to me is really the progressive and proactive machinery, the government machinery under the Honorable Chief Minister as well as the bureaucrats. I think they have been absolutely fantastic right through. And I do recall during the pandemic, we can't stop our lines, and they went extraordinary effort to make sure that we followed all the right protocols, we worked with them and made sure that our lines are run very well. And that really made a huge difference when we look at our investment. Third is the policies. The policies have been very, very flexible and very highly tailor-made to each and every industry's unique needs. And I think that's really something which is very special about Rajasthan.
we've worked with the chief secretary, we've worked with the finance secretary, the industry secretary, and the RICO chairman. All of them work together with collaborative spirit to make sure they deliver whatever they committed. And that's really something which I can say. And I can tell you today, and that almost every single financial benefits that we have to receive, on date, Rajasthan has delivered. I can't think of any other state in India which delivers it time after time, quarter. So when you are really investing it, so it's a progressive, and the whole thing is a partnership orientation. Whether you are in difficulty like during the pandemic or whether things are going very well, I think there is a partnership spirit. That's the fourth P. But when you all have all of this, the businesses are in the pink of health. And I'm not surprised that this is a state and therefore the pink of health. So when I really look at this, the people, the progressive government, the proactive government, the policies, and the flexibility, and the fact that you can prosper in this state, I'm not very surprised. Companies like us will continue to stay invested in the state. Really look forward to working with you and your team, sir. Thank you. बहुत बहुत धन्यवाद सर अपने अनुभव हमारे साथ साझा करने का एंड थैंक यू सो वेरी मच फॉर द ट्रस्ट एंड द कॉन्फिडेंस इन द स्टेट मशीनरी एंड द लीडरशिप। और अब मैं आमंत्रित करती हूँ श्री अजय एच श्रीराम जी को, चेयरमैन एंड सीनियर मैनेजिंग डायरेक्टर DCM श्रीराम लिमिटेड। Honorable Chief Minister of Rajasthan, Shri Ashok Gehlot Ji, Honorable Minister for Industries and Commerce, Srimati Shakuntala Rawat Ji, Honorable Ministers and dignitaries on the dais, Chief Secretary of Rajasthan, Additional Chief Secretary of Secretaries, Senior Government Officials, my eminent industry colleagues on the dais, ladies and gentlemen. At the outset, I would like to thank our Chief Minister, Shri Ashok Gehlot Ji, and the state government for inviting me to this inaugural event. It's a privilege and honor to be present in Jaipur today. If I may strike a personal note, coming to Jaipur for me and for DCM Shriram Limited is like homecoming. Our business has deep roots in the state of Rajasthan, and over the years, it has grown to become a big tree. We established our multi-product manufacturing facility in Kota in 1963. And since then, it has grown manifold. This has been possible because of the favorable policies and the industrial climate in the state. The entire ecosystem has encouraged ancillarization and other services to come up, which are essential and an integral part for large industries to flourish. Our numbers speak for the growth trajectory. The production of various items have gone up 10 to 15 times across categories, reflecting significant investment towards capacity enhancement and job creation. As a result, our Kota complex is now an integrated facility where many of our byproducts are raw material for further value addition. By following a circular economy route for better sustainability, we have implemented various water conservation measures. In fact, we have made at our factory complex a water harvesting pond for collecting 4.5 lakh cubic meters of water, which is used in our industrial process. Simultaneously, in the areas and villages around us, we have already made 9 water harvesting water bodies, 4 more are under implementation, and we will continue this exercise going forward. We do believe that water is a scarce resource. It requires management, it requires value, and our objective is to help in water conservation across the board. The hydrogen produced in a chloralkali plant is used as fuel, thereby reducing greenhouse gas emissions. We have gradually increased the use of renewable biomass to 15% of feedstock
for our power generation and the installation of solar panels are in an advanced stage of evaluation. Essentially, for all our investment decisions, environment, safety, and governance are an integral part. There are several expansion plans in the pipeline, ranging from advanced agri-input manufacturing to our branded Fenesta UPVC windows and doors business, as the state provides the right mahal for continuously expanding and growing. The introduction of a single window system as part of the ongoing business reforms is most welcome. Setting up of ITIs with industry partnership have provided adequate skilled manpower. Our company too has partnered in setting up ITIs. People of Rajasthan have always been known for their hospitable nature, willingness to learn, and an honest disposition, all contributing to the conducive business environment. All of us are aware that for raw materials and access to markets, efficient logistics are a key requirement. Even though Rajasthan is a landlocked state, excellent highways provide easy access to the ports of Gujarat and Maharashtra. I would like to mention that there are two significant projects that will be game changers for the state of Rajasthan and will improve the logistics tremendously. The first is the 1500-kilometer Western Freight Corridor that links NCR to the ports of Gujarat and Maharashtra. Of this, 550 kilometers passes through Rajasthan, with key towns and industrial hubs on its route. The second is the Delhi-Mumbai Expressway, which is due for inauguration in early 2023. Of its 1,200 kilometers, 350 kilometers passes through Rajasthan. With these two mega infrastructure projects, movement to states such as Delhi, Haryana, UP, Madhya Pradesh, Maharashtra, and Gujarat can be done at a sustainably reduced cost and time. This will provide Rajasthan with a competitive edge. Collectively, we do need to take steps for industry to grow further and faster and to be globally competitive. Typically, transaction costs tend to be on the higher side across the board, and it's all over India. Industry and government should now jointly benchmark and collaborate to accomplish global best practices. Sirs, I'd like to mention that on behalf of CII, we would be honored to work with your state government to study these aspects and see how we can work more to attract industry and provide jobs to the state of Rajasthan. Another area that offers Rajasthan a niche opportunity is to value add to agricultural produce that is unique to the state. It could range from millets to cumin and medicinal plants to organic horticulture. This will provide farmers with additional income and generate employment for a large number of farm labor. Ladies and gentlemen, I would like to once again thank the state of Rajasthan for inviting me and providing me the opportunity to share my experiences. I'm sure that this event will attract investment and generate employment, which is the need of the hour. Thank you. Thank you, sir, to you also for sharing with us your industrial footprints in the state and your further investment and expansion plans. And now inviting Mr. Sudhir Mehta, the chairman of Torrent Group, for his address. Honorable Chief Minister of Rajasthan, Shri Ashok Gehlot Ji, Honorable Minister of Industry and Commerce, Srimati Shakuntala Ji,
all dignitaries sitting on the dais, captain from diverse industry sector, and all eminent guests, ladies and gentlemen. It's an honor to be part of Investment Rajasthan, the investor outreach program committed to collaborate development. It is also an honor to represent Torrent Group, which has played a vital role by its contribution to crucial healthcare, power and city gas distribution sector in India and playing a significant role in overall economic development of the country. Torrent Power, with its vast experience and presence in more than 12 cities of India, is one of the most efficient utility company in the country. Torrent Gas, on the other hand, committed to making natural gas widely available to people in the area of its authorization and making natural gas widely available, create an ecosystem to provide a major boost in the social economic development. The state of Rajasthan has always been an attractive investment destination owing to its rich natural resources, infrastructure facility, investor-friendly policy, backed by ease of doing business and skilled manpower availability. I am happy to share with you that our group company, Torrent Power, is strategically venture into new area of green hydrogen, battery energy storage system, and pump storage hydro, which have a strong synergy to renewable generation. We plan to develop 10,000 megawatt renewable energy project in Rajasthan in phased manner, and we are identifying suitable land parcels for these projects. This proposed plan in renewable energy and hydrogen will involve an investment of more than 60,000 crore, which will help us to grow sustainably, profitability, creating a value for our stakeholder in the medium and long term. Torrent Gas, our other and group company, is one of the youngest and fast-growing city gas distribution utility in the country, authorized by the PNGRB to develop CGD. In Rajasthan, we are authorized in 5 districts: Jaipur, Alwar, Kota, Baran, and Dholpur, for distribution of CNG for vehicle and PNG for domestic cooking industrial unit and commercial established. Torrent proposed to invest more than 6,000 crore for creation of gas distribution infrastructure in the state of Rajasthan. Torrent is committed to connect more than 50 industries in Alwar district and entire RICO Dholpur industrial area by March 2023. This overall infrastructure shall not only give the citizen a cleaner tomorrow, but also boost to the socio-economic development of the transport sector. On the healthcare front, Torrent planned to invest also in Rajasthan in hospitals and other allied. Sure that Investment Rajasthan Summit will definitely prove to be a fruitful platform for enhancing new investment and creating more business partnership, and also be a platform for valuable deliberation for charting course of balance and sustainable social economic development of the state of Rajasthan. Thank you. Jai Hind. बहुत बहुत धन्यवाद सर। और अब आमंत्रित हैं श्री सी के बिरला जी, चेयरमैन सी के बिरला ग्रुप। उनसे निवेदन है उनके उद्बोधन के लिए। आदरणीय मुख्यमंत्री जी श्री अशोक गहलोत जी, आदरणीय इंडस्ट्री एंड कॉमर्स मिनिस्टर राजस्थान गवर्नमेंट श्रीमती शकुंतला रावत, डॉक्टर सीपी जोशी, ऑनरेबल स्पीकर, government officials and various dignitaries, ladies and gentlemen.
It is a great pleasure to be here with all of you today in Rajasthan, a state where the legacy of the Birla family is rooted. I'm proud of the heritage we share and our long personal and business association. A big thank you to the government of Rajasthan for inviting me over here and for the support and encouragement in enabling all our investments in the state. India's economic growth rests on the shoulders of its dynamic states. India is expected to be among the fastest growing large economies in the coming decade, and the states have a critical role to play in accelerating reforms for promoting industry. Rajasthan has made significant efforts in increasing its attractiveness as an investment destination. This gives enormous encouragement to the people like me, and in an increasingly competitive environment where private sector capex has been weak, both industry and investors need a supportive environment with proactive investor-friendly policies. I must add that most states today are becoming increasingly proactive in rolling out investor-friendly policies to invite investments to increase their state GDP and to create employment opportunities through the multiplier effect of capital. Invest Rajasthan is a very important and much-needed event to suitably showcase the opportunities and support available to potential investors in Rajasthan. I am confident that the government of Rajasthan will continue to offer encouragement and support through these policies to accelerate the industrial development in the state and give it a further competitive edge. The Birla family has had a long and rich history on investing in Rajasthan, and I can proudly share that we have just celebrated the 75th anniversary of our world-class bearing manufacturing plant, NBC Bearings, right here in Jaipur. This plant ships its state-of-the-art bearings to the global markets in addition to serving the Indian markets. And as a part of our continued commitment to investing in the state, we have started construction of our third bearing plant in Bagru near Jaipur with an investment of over rupees 1,000 crores. Such is our confidence in Rajasthan that we have another large investment in the state in the shape of a greenfield integrated cement plant planned with an initial investment of around rupees 2,500 crores. With this, we hope to create employment and business opportunities for at least a few thousand families in Rajasthan. Our ambitions for cement are quite large, and we intend to continue to expand the capacity and investments in the next phases of growth. The Birla family has always had a tradition of giving back to the community, and Rukmini Birla Hospital, part of the C.K. Birla Hospital, which was established a few years ago in Jaipur, is an example of a state-of-the-art facility which works closely with our 4 other hospitals and healthcare ventures to capture the best global clinical care and practices. Our family's support to education and other cultural infrastructure, such as the Science Center, Planetarium, and a school in Jaipur, is well known and needs no introduction. It is heartening to note the initiative the Rajasthan government is taking to improve the ease of doing business in the state by the one-stop shop facility, a major step taken by the government to nurture investor friendliness is very well appreciated. Rajasthan has some inherent advantages. It is very rich in mineral, its proximity and connectivity with the NCR region, and the fact that more than 40% of the Delhi-Mumbai freight corridor passes through Rajasthan. The infrastructure, connectivity, law and order, labor situation make Rajasthan a favorable business destination. To leverage these advantages, the state government has put in place progressive initiatives to attract investments. The recently launched policy like the Rajasthan Investment Promotion Scheme, New Industrial Development Policy, MSME Facilitation Act, etc., with many good and new points added in the policy. We are sure that these policies, and more importantly, further steps to make Rajasthan a competitive destination for capital and skills will bring more investments and employment to the state. From our own experience as a business group, I can state that Rajasthan is one of the favorable places to do business with.
And with the recent reforms, we look forward to seeing the competitive position of the state to improve further. Thank you. Thank you, sir, for sharing with us your industrial and very remarkable philanthropic footprints in the state of Rajasthan and your further business plans here. And now inviting Mr. Anil Agarwal, the founder and chairman of Vedanta Group, to please address the August gathering. नमस्कार। मैं जब छोटा था तो हम लोग चौमू में रहते थे और चौमू से फिर यहाँ बापू नगर आए तो वहां से दादी मेरे को तांगे में गोविंद देव जी के मंदिर लेके आती थी और 7, 8, 9 साल की उम्र रहती होगी। उस समय वो एक कहानी सुनाती थी कृष्ण और अर्जुन के बीच की, सगुण और निर्गुण। बोलती थी कि अर्जुन ने कृष्ण जी को पूछा कि ये सगुण और निर्गुण में क्या फर्क है। उन्होंने कहा कि निर्गुण जो है वो भगवान की खाली भक्ति करता रहता है, वो मेरे बहुत प्रिय है और रात दिन भजन ही करता रहता है। और सगुण जो है वो भी मेरे काम में लगा रहता है, लेकिन कभी उसको मेरी नाम लेने की फुर्सत नहीं रहती है, लेकिन वो खाली मेरा ही काम करता रहता है, खाली मेरे काम में ही लगा रहता है कि कैसे मैं जन सेवा करूं, कैसे मैं समाज का हित करूं। तो अर्जुन ने पूछा कि दोनों में से आपको कौन प्रिय है। उन्होंने कहा दोनों मेरे प्रिय हैं। मेरी दादी जी बोलती थी, आप लोग अपने हिसाब से दोनों मेरे प्रिय हैं। बहुत ज्यादा जोर दिया तो उसने कहा, कृष्ण ने कहा कि सगुण मेरे को ज्यादा प्रिय है। मैं उसमें हमारे अशोक गहलोत जी को लेता हूं। मेरे को यहां आमंत्रित करने का अशोक गहलोत जी, सीपी जोशी जी, सारे मंत्रीगण, हमारे अडानी साहब, सीके बिरला साहब, सारे लोग इकट्ठे हुए हैं। ये सब हम लोग जुड़े हुए हैं एक दूसरे से। और राजस्थान जो एक जगह है वो एक अद्भुत, एक ईश्वर की देन है। किसी जगह को डेवलप करने के लिए नेचुरल रिसोर्स, जो नेचुरल रिसोर्स यहाँ भरा हुआ है उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। ह्यूमन रिसोर्स, जो आपको यहाँ काम करने वाले मिलेंगे, हमारे यंग युवा, मैं उन्हीं के लिए आया हूं कि जो आज हमारे मुख्यमंत्री जी ने जो आह्वान किया है, स्पेशली लड़कियों को। मैं लास्ट 2 महीने पहले आया था, उस समय उन्होंने आईटी की कुछ कॉन्फ्रेंस की थी और हर गांव से एक एक बच्चे को, 2-2 बच्चों को बुलाया था और उनको प्रेरित किया था कि आप टेक्नोलॉजी के माध्यम से, डिजिटल के माध्यम से अपने गांव का उद्योग को आगे बढ़ाओ। तो उसमें मैंने कहा था कि आप ही लोग इस राजस्थान की धरती को आगे लेके जा सकते हो। और इस तरह की बात भी सोचना सरकार के लिए बहुत बड़ी बात है। राजस्थान जो है, मैं यहां काम करता हूं, ये दूसरा मिडिल ईस्ट है। यहां पे जितना तेल भरा हुआ है, जितनी गैस भरी हुई है, मेरे हिसाब से ये मिडिल ईस्ट का मुकाबला कर सकती है। हमारे यहां जो खनिज भरा हुआ है, चाहे वो रॉक फॉस्फेट हो, चाहे वो सोना हो, चाहे वो चांदी हो, चाहे वो जिंक हो, चाहे रेयर अर्थ हो। रेयर अर्थ के मैंने देखा कि पूरी दुनिया में आज शॉर्टेज है। चाइना ने पूरा कंट्रोल कर रखा है।
वो सबसे ज्यादा मात्रा में हमारे राजस्थान में है। चाहे वो लिथेनियम हो, चाहे पैलेडियम हो, चाहे जो भी आपको चाहिए वो राजस्थान में है। राजस्थान में सरकार ऐसी है जो आगे बढ़ने देना चाहती है। बहुत सारे काम राजस्थान गवर्नमेंट को सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ बातचीत करके उनको उनकी ड्यूटी कम कराना, उनको प्रेरित करना, जिससे कि आगे से आगे सिंपल तरीका से हम लोग इस खनिज को आज हिंदुस्तान में अगर 100 रुपया है तो 63 रुपया खाली इंपोर्ट में चला जाता है, वो भी सारा का सारा नेचुरल रिसोर्स में। और ये सारा नेचुरल रिसोर्स राजस्थान जैसे पंजाब पूरे देश को खाना खिलाता है, हमारा राजस्थान पूरे देश को, चाहे वो किसी भी तरह, आज हम टेक्नोलॉजी में भी जाते हैं, चाहे हम सेल फोन बनाएं, चाहे लैपटॉप बनाएं, चाहे टीवी बनाएं, चाहे कोई भी इलेक्ट्रॉनिक आइटम बनाएं, उसमें सबसे ज्यादा मेटल का ही कंजम्पशन होगा। मैं आज आप लोगों से और भी बोलने वाला हूं। मेरे सबसे खास मित्र अडानी साहब बैठे हुए हैं। हम राजस्थान में पहले गुजरात में सेमीकंडक्टर की फैक्ट्री लगा रहे हैं और ग्लास की फैक्ट्री लगा रहे हैं। एक क्लस्टर बनाना चाहते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट है कि हमारे जो बच्चे हैं 15-16 साल के, उनको एक्सेस लैपटॉप का हो। अगर लैपटॉप का एक्सेस उनको हो जाएगा, आज लैपटॉप जो है 1.5 लाख रुपए में मिलता है, अगर वो लैपटॉप 40,000, 45,000, 50,000 रुपए मिल जाए और उसके ऊपर उसको 70%, 80% लोन मिल जाए, तो विंडो टू द वर्ल्ड वो 15 साल 16 साल के बच्चे को हो जाएगा। उसको कोई कोर्स करना है, उसको मालूम पड़े कि ये मेरा शौक है, इसमें मैं अपना करियर डेवलप करना चाहता हूं। ये हमने एक्सपेरिमेंट जयपुर के पास में एक कॉलेज है रिंगस में, उसमें किया। 5,000 बच्चों को हमने दिया, वो दूसरे लेवल पर हैं। तो ये मैं आप लोगों को एक आह्वान करना चाहता हूं, एक तो नेचुरल रिसोर्स में और एक टेक्नोलॉजी में जो राजस्थान अग्रसर हो सकता है। आपसे एकदम राजस्थान और गुजरात तो एक साथ जुड़े हुए हैं। 1 घंटे की ड्राइव में आप गुजरात पहुंच सकते हैं। हम लोग दोनों स्टेट जुड़े हुए हैं। वहां से अगर रॉ मटेरियल आए और एक क्लस्टर बने, जिससे कि हम लोग यहाँ पे, आज हमारे गरीब से गरीब लोग 20,000 रुपए का फोन अफोर्ड नहीं कर सकते हैं। ये फोन अगर सेमीकंडक्टर और ग्लास अगर यहाँ बनने लगेगा तो 4,000-5,000 रुपए में फोन मिलेगा। लैपटॉप जो है 40-50,000 रुपए में लैपटॉप मिलेगा। और जो टीवी जो आज हमें 30,000-40,000 रुपए लगते हैं, वो 5,000 रुपए में मिल सकता है। और ये हम लोग तो सपनों में ही रहते हैं और सपने ही देखते हैं। अगर सपने देखना किया तो सपने साकार भी हो जाते हैं। 5 करोड़ की, 10 करोड़ की, 20 करोड़ की इंडस्ट्रियां लगे, राजस्थान सबसे सस्ता पावर देगा, सबसे सस्ता यहाँ ह्यूमन रिसोर्स है। और जो एडमिनिस्ट्रेशन है और जो हमारे अशोक गहलोत जी के राज में जिस तरह का परिवर्तन आया है, गरीब से गरीब लोगों को जो परिवर्तन आया है, ये पूरी हिंदुस्तान देखती है, पूरी दुनिया देखती है। मैं कनाडा में 3 दिन पहले था, वहां भी लोगों ने कहा, क्योंकि आजकल सब लोगों को सब चीज मालूम रहती है कि जो खनिज कनाडा में है उससे ज्यादा राजस्थान में, उन्होंने बताया। कनाडा में हम लोग 6 महीने ही काम कर पाते हैं क्योंकि ठंड बहुत रहती है, 6 महीने हमको माइनें बंद करनी पड़ती है। लेकिन राजस्थान ऐसी जगह है जहां की आप 12 महीने अपनी माइंस चला सकते हैं। 2000 जो जमीन में पत्थर हैं, आज हमारे यहाँ राजस्थान में कम से कम 30 तरह के पत्थर हैं, जिसकी इतनी डिमांड है पूरी दुनिया में। और हमारे अशोक गहलोत जी ने बहुत मेहनत करके मीडियम साइज के व्यापारियों को आह्वान किया है कि इसका ऑक्शन करें, इस क्लस्टर को लें, इसको डेवलप करें, और इंसेंटिव दे रहे हैं कि अगर इसको आप फिनिश प्रोडक्ट भी बना सकते हैं तो इसमें हम आपको और इंसेंटिव देंगे। जो वैल्यू एडेड प्रोडक्ट बनके एक में 1000 आदमी के लगभग लोग काम करेंगे। ये भी एक बहुत बढ़िया इंडस्ट्री है जिसको हम लोग डेवलप कर सकते हैं, आगे बढ़ा सकते हैं।
मैं अगली दूसरी बात पे आता हूं, टाइम कम है तो युवाओं के लिए जितना खेल कूद में हमारी लड़कियां, हमारे लड़के अग्रसर हो रहे हैं, बहुत दिनों से बात चल रही थी। मेरे को मौका लगा गुजरात में अहमदाबाद में स्टेडियम देखने का। मैं आश्चर्यचकित रह गया। इस वर्ल्ड क्लास के स्टेडियम बना अहमदाबाद में। हमारे मुख्यमंत्री जी की बहुत इच्छा थी कि ऐसा स्टेडियम जयपुर में भी बने, और मेरे को उन्होंने धीरे से कहा आप इसमें भागीदारी लीजिए और इसको पूरा कीजिए। मैं आप लोगों के सामने आज सामने से ऑफर करता हूं कि मैं पूरा साथ दूंगा मुख्यमंत्री जी का, और इस स्टेडियम को बनाएं। हमारे बच्चे, मैं पूरा साथ हूं। हमारे लड़के लड़कियों को जरूर आप आगे बढ़ाएं। हमारी लड़कियां राजस्थान की सबसे ज्यादा अग्रसर हैं। आप लोग भी अगर कोई इंडस्ट्री लगा रहे हैं हर क्षेत्र में, 30 से 40% लड़कियों को जरूर आगे लाएं, उनको काम दें। आप विश्वास माने, हम राजस्थान में लड़कियों को आगे प्राथमिकता देते हैं। 3-3 किलोमीटर नीचे माइंस में वो जाती हैं, सबसे अच्छा प्रोडक्शन करती हैं। तो आप लोगों को ये बहुत ये इतना बड़ा उद्घाटन हो रहा है, इतनी बड़ा कार्यक्रम हो रहा है। इतनी दूर से मैं एक्साइटेड था आने के लिए, मिलने के लिए। हमारे जो भी हम प्रोडक्ट यहाँ बनाते हैं उसमें डाउन स्ट्रीम में हम कुछ भी आपकी मदद कर सकें, किसी भी काम में आ सकें। हिंदुस्तान जिंक केन आपके साथ में है। एक बार फिर मुख्यमंत्री जी का, पूरे राजस्थान सरकार का और आप लोगों का, जो आप इतनी दूर दूर से आए, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपके प्रोत्साहन भरे संदेश के लिए, और साथ साथ राजस्थान की ओर विकास की तरफ आपके अग्रणी विचारों और सुझावों के लिए भी धन्यवाद। Ladies and gentlemen, we were supposed to be joined today also by Shri Ellen Mittalji, the Chairman and Managing Director of ArcelorMittal. Unfortunately, due to some unforeseen circumstances, he's not been able to join us, but he has sent across his message. And I would like to now invite and request Mr. Prabhat Das, the CEO and Managing Director of HPCL Mittal Energy Limited, to please read out the message of Mr. Ellen Mittal. Mr. Ellen Mittal was very eager to be with you all today. However, last-minute health issues have restrained him from coming to India. He has conveyed his personal regret to you all and to Honorable Chief Minister for this inconvenience. I will read out his message. Honorable Chief Minister Shri Ashok Gehlot Ji, Honorable Minister for Industries Srimati Shakuntala Rawat Ji, Shri C.P. Joshi Ji, distinguished recipients of the prestigious award, delegates, ladies and gentlemen, a warm welcome. I am thankful to you all for honoring me with Rajasthan Ratna. This is Rajasthan's highest award and I accept it with pride and humility. This is an honor especially touches me. For Rajasthan is a state of my birth. I was born in Sudalpur in the north. Our family dreamt, and as a young man, I moved east to the another land, another set of dreams. So being here today, back where it all started, felt like completing a journey. I'm humbled to be in the company of other recipients who have chased dreams in business and law and have contributed so much. My sincere congratulations. I thank you again, the golden state of Rajasthan. My relationship with Rajasthan has always remained true and firm. The feeling of belonging has stayed with me wherever I found myself making steel, most recently in India itself. What has also remained true
is my belief in preparing for next generation, the young people who will be future recipient of Rajasthan Ratna. This is why my family foundation decided about 2 years ago, under the guidance and support of Ashok Gehlotji, to set up a place of learning, and we chose 100 acres of land near Jaipur city. Today, this college is a dream university, preparing for young people for the world of deep change with undergraduate, postgraduate, and doctorate program. What has inspired me is the sight of graduating students responding to access and opportunity. Our university has served thousands of students and faculty members across the field of technology, engineering, and artificial intelligence. We are now taking a quantum jump, and we are setting up an artificial intelligence data center in this institute. The next level, of course, our common challenge. Our country has achieved many recognitions for its technology capability. But unless we prepare our young men and women for the next wave, then they will be disadvantaged. The vast opportunity squandered our country. My own plea is for education and skill enhancement to train the jobs for the future, advanced manufacturing, research laboratory, and frontier technology. So we must step up skill training not only at the top end, but also across the chain of industry capabilities in an economy changing before our eyes. And let me say, these jobs are coming. Our economy is responding to the positive government policies and shift to its own level in the energy transaction, in supply chain management, and in enhancing engineering. Let me come back to Rajasthan and say that Honorable Chief Minister, under his great leadership and vision, the government machinery is very swiftly moving and effectively developing the state of Rajasthan. The state of Rajasthan has a lot of potential, and we are committed and working for the development of the state. I wish a grand success for this new initiative of Honorable Chief Minister on Invest Rajasthan. Thank you. Namaskar. Thank you, sir, for sharing with us the views and the investment plans by Mr. Mittal in the state of Rajasthan. And now, ladies and gentlemen, inviting Mr. Gautam Adani, the founder and chairman, Adani Group, to please address this August gathering. Honorable Chief Minister, Shri Ashok Gehlotji, senior leaders of government, captains of industry, and my dear friends. It is a privilege to be attending the Invest Rajasthan 2022 summit and have this opportunity to talk about the existing presence and future plans of the Adani Group in this magnificent land of kings we call Rajasthan. This is the soil that gave us some of our bravest national figures, Amira Deva, Maharana Kumbha, Hemchandra Vikramaditya, Maharaja Surajmal, and of course, Maharana Pratap. The toughest of the deserts gave us the greatest of our warriors. No wonder I find every visit to Rajasthan personally very inspiring. Honorable Chief Minister, during your previous term, when I first met you to express our interest to invest in the power sector in Rajasthan,
I clearly recall how you immediately supported us and directed your administration to identify and allocate land, water, as well as other clearances in the shortest time possible. That was the fastest decision-making process I have ever witnessed. And it was the speed which allowed us to set up 1,320 megawatt Kawai super thermal power project in just 36 months. A record for India and a record for any power plant the Adani Group has built. Honorable Chief Minister, sitting next door in Gujarat, I'm also privileged to have a ringside view of your leadership. In Rajasthan's social upliftment, as well as in the state's economic growth. The social welfare schemes you have implemented, like the Jagriti Back to Work scheme, the Shakti Udan Yojana, and the Mukhyamantri Anupriti coaching scheme are trendsetter and driving employment, enabling greater and inexpensive access to education and healthcare, thereby making social security very stronger. These schemes have been a benchmarks for India in their scale, their intent, and the impact that they have had. In the economic domain, your vision has laid the foundation to turn Rajasthan into our nation's solar energy leader. It is fascinating to see you repurpose what many call the inhospitable Thar Desert into one of the global capitals of our renewable power. Our commitment to your vision is reflected in our actions. Our joint venture with the Rajasthan government, which has led to a fully functioning solar park of a 10,000 megawatt, is already operational and producing over 1,500 megawatt of a green power. Also, our group's direct investment into renewable in Rajasthan continues to accelerate and have already commissioned projects of more than 4,000 megawatt at an investment over rupees 20,000 crores. In addition, over the past decade, we have been supplying fuel to the state's thermal power station to help produce over 4,300 megawatt of the thermal power plant. We have been operating 19 grid substations and associated high voltage transmission lines, operating the dry port container terminal in Kasaragod, managing and expanding the Jaipur airport, as well as operating 2 edible oil refinery in Alwar and Bundi. Overall, I am proud to say that Adani Group has already invested over rupees 35,000 crore across multiple industrial sectors in the state of Rajasthan. Let me now talk about our future investments. Continuing our investment in renewable business, another 10,000 megawatt with an investment of rupees 50,000 crore is under implementation. And this will be commissioned progressively over the next 5 years. In this context,
Just a week ago, we also achieved commercial operations of the world's largest wind solar hybrid power plant, and it is here in Rajasthan. Following our acquisition of Ambuja Cement and ACC, we are now the second largest cement manufacturer in India. While we already have 3 plants and a limestone mining asset, a significant part of our capacity expansion will continue to happen in Rajasthan. We anticipate investing another 7,000 crore rupees to double our cement manufacturing capacity in the state. There is more. Other projects in various stages of execution and expansions include expanding the Jaipur Airport into a world-class facility, developing our networks to supply PNG and CNG, and accelerate cleaner fuel availability to industrial, commercial, transport, and domestic consumers. New transmission projects to move the renewable power being generated. Combining all ongoing and future investments, we anticipate investing an additional rupees 65,000 crores in Rajasthan over the next 5 to 7 years and creating over 40,000 direct and indirect jobs. The Adani Group is also making one of the world's largest bet on energy transitions. In this process, we are betting on green hydrogen, given our ability to generate the most inexpensive solar and wind power. I believe this opportunity to generate green hydrogen to transform Rajasthan deserts into an oasis of jobs enabling energy transitions is an opportunity that no other state has. Honorable Chief Minister, this will be yet another game changer aligned with your vision for the sustainable industrial development of Rajasthan. Galotji, just as the warriors of Rajasthan had turned their understanding of the deserts into their greatest strength, you have set in motion a moment that is yet again turning the deserts of Rajasthan into the state's greatest strength. I wish you and your team all the very best. Thank you. Jai Hind. Thank you, sir, for sharing with us the very massive and impressive footprints which you have in the state of Rajasthan and your further investment plans being partners in success with the state. Thank you, sir. और हम विशेष रूप से सभी हमारे कैप्टन्स ऑफ द इंडस्ट्री का भी धन्यवाद करना चाहेंगे हमारे साथ अपने विचारों को साझा करने का और अपने जो गेम चेंजिंग प्लान्स है राजस्थान की उन्नति और प्रगति की तरफ वो हमारे साथ यहाँ पर अपने उद्बोधन में साझा करने का। और देवी सज्जनों, अब हम सभी इच्छुक हैं हमारे नेता हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी के संदेश को सुनने के लिए। तो सभी की तरफ से मैं करबद्ध होकर निवेदन करती हूँ माननीय मुख्यमंत्री जी से, श्री अशोक गहलोत जी से, कि हम सभी के मार्गदर्शन हेतु अपने विचारों से हमें अनुग्रहित करें। यहाँ उपस्थित हमारे
राजस्थान विधानसभा के अध्यक्ष डॉक्टर सीपी जोशी जी, उद्योग मंत्री श्रीमती शकुंतला रावत जी, अध्यक्ष अडानी ग्रुप गौतम अडानी जी, अध्यक्ष वेदांता समूह अनिल अग्रवाल जी, सुधीर मेहता जी, सीके बिरला जी, एच.एम. बांगड़ साहब, चंद्रनील बैनर्जी, अजय श्रीराम जी, बी संतानम जी, अरविंद मायाराम जी, उषा शर्मा जी, चीफ सेक्रेटरी, बीनू गुप्ता जी, एडिशनल चीफ सेक्रेटरी, कुलदीप नाका जी, और मेरे तमाम कैबिनेट के मंत्रीगण, विधायकगण और जितने भी इन्वेस्टर्स आए हैं, अधिकारीगण, भाई और बहनों, सबसे पहले मैं अपनी ओर से जितने हमारे मेहमान आए हैं, डेलीगेट आए हैं, लगभग 3000, उनका मैं हार्दिक स्वागत करता हूँ। ये राजस्थान इन्वेस्ट का आयोजन लंबे अरसे से चर्चा में था। मुझे खुशी है कि आज हम लोग यहाँ पर सुन रहे हैं हमारे साथियों को एक के बाद एक। गर्व होता है प्रदेश पे भी और देश पे भी। आज़ादी के 75 वर्ष अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है। लंबा सफर तय करते करते आज हम यहाँ तक पहुँचे हैं, जिस वक्त यहाँ बैठे हुए हैं, और ये आयोजन हो रहा है। मेरे ख्याल से जब आज़ाद हुआ मुल्क तब हालात दूसरे थे। राजस्थान जैसे प्रदेश में 13 मेगावाट बिजली थी। लोग समझते नहीं थे बिजली होती क्या है। राजा महाराजाओं के महलों में बिजली टमटमाती थी, खाली वो जनरेटर थी। आप कल्पना कीजिए हम कहाँ से कहाँ पहुँचे हैं। इसका घर पूरे देश को है, होना भी चाहिए। पानी में, शिक्षा में, स्वास्थ्य में, सड़कों में, बिजली में कोई कल्पना नहीं कर सकता था। 13 मेगावाट से आज 23,000 मेगावाट से ज्यादा बिजली का उत्पादन राजस्थान हो रहा है। शिक्षा क्या थी कोई सोच नहीं सकता। अब जाल बिछ रहा है। जब मैं 24 साल पहले था मुख्यमंत्री पहली बार, तो 6 विश्वविद्यालय थे। आज 89 विश्वविद्यालय राजस्थान के अंदर, 89 विश्वविद्यालय। अभी मैंने 3 साल में 200, आज लड़कों से ज्यादा लड़के पढ़े राजस्थान के अंदर। तो चाहे शिक्षा हो, चाहे स्वास्थ्य सेवाएं हो, जिसका जिक्र किया गया, मैं रिपीट नहीं करना चाहूंगा। सरकार कुछ आगे आकर के शिक्षा को प्रोत्साहन दे रही है। विश्वविद्यालय, कॉलेजेस, अनुपति के अंतर्गत कोचिंग फ्री बच्चों को, और साथ में अभी 200 छात्रों को। दुनिया के किसी मुल्क में जाएंगे बच्चे, उनका पूरा खर्चा पड़ेगा, सरकार उठाएगी। ये मैंने घोषणा करेगी बजट के अंदर। और मेरे ख्याल 160 बच्चे जा चुके हैं। तो कहने का तात्पर्य है कि हमने अमृत महोत्सव जो मनाया जा रहा है देश के अंदर, और ये आयोजन भी हो रहा है, हर क्षेत्र में हमने प्रगति की है। सड़कें शानदार राजस्थान के अंदर। इन्वेस्टर के लिए सोचने की बात है कि चाहे लेबर अनरेस्ट हो, यहाँ नहीं मिलेगी आपको। लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति यहाँ ज़्यादा अच्छी है। नेशनल हाईवेज, स्टेट हाईवेज, मेगा हाईवेज, डिस्ट्रिक्ट मेजर रोड्स,
का जाल बिछ गया है। तो एक इन्वेस्टर को जो सुविधाएं चाहिए, जिससे आपने देखा अभी मेरे पूर्व वक्ताओं ने फिल्म के माध्यम से भी और अपने स्पीच के अंदर बताया आपको कि सब तरह से हमारी जो पॉलिसीज है किसी भी तरह की, वो इन्वेस्टमेंट फ्रेंडली पॉलिसी बन रही है। और कस्टमाइज पैकेज अलग मिल रहे हैं। पॉलिसी में हमेशा राजस्थान ने ये प्रयास किया है कि कैसे इन्वेस्टमेंट आकर्षित हो। चाहे विंड जब आया था पहली बार, मुझे याद है 3-4 मेगावाट से मैंने उसका शिलान्यास किया था जैसलमेर के अंदर। मुझे तांती जो अभी हाल ही में उनका स्वर्गवास हो गया है, बहुत दुखद घटना थी, सुडलोन कंपनी से। फिर 4,500 मेगावाट तक हमने विंड एनर्जी पैदा करी। गौतम अडानी जी कह रहे थे 10,000 मेगावाट से अधिक बिजली सोलर से बन रही है। तो जो स्कीम, जो पॉलिसी सरकार ने रखी है, मैं समझता हूं कि उसके कारण से इन्वेस्टर फ्रेंडली माहौल बना है राजस्थान के अंदर। और उसी रूप में हम लोग चाहते हैं कि आने वाले वक्त के अंदर भी, कोरोना आ गया था, बहुत स्थिति ऐसी बन गई थी, पर मुझे खुशी है कि कोरोना के बाद में भी जो माहौल बना है, क्योंकि हमने कुछ फैसले भी किए। हमने उद्योगों को सहारा दिया, वैट में, ट्रांसपोर्ट में, एक्साइज में, स्टाम्प ड्यूटी में, होटल्स हैं, ट्रेवल एजेंट्स हैं, टूर ऑपरेटर हैं, इन सबको महसूस करवाया कि इस संकटी घड़ी में इंडस्ट्री के साथ में, व्यापार के साथ में, टूरिज्म के सेक्टर के अंदर, जैसा भी हमने टूरिज्म को इंडस्ट्री का दर्जा दे दिया और लागू भी कर दिया। कल मैं कह रहा था कि जब मैं 35 साल पहले मंत्री खुद था टूरिज्म और सिविल एविएशन का, इंदिरा जी और राजीव गांधी जी के साथ में, तो मेरा सपना था कि टूरिज्म को इंडस्ट्री का दर्जा मिलना चाहिए। घोषणाएं हुई और जो वास्तव में छूट मिलनी चाहिए वो लागू कभी नहीं हुई। संयुक्त लिखा था मेरे ही हाथ का, इसलिए हमने इस साल के बजट में हमने टूरिज्म को इंडस्ट्री का दर्जा दे दिया। और पूरा इंडस्ट्री जो टूरिज्म की है वो तमाम इस बात को लेकर बहुत ही प्रभावित है। इस प्रकार से मैं समझता हूं कि राजस्थान में CIA का जो साथ में सहयोग रहा हमारे साथ में, माहौल बनाने में बहुत बड़ी उपलब्धियां हासिल में हुई। सहयोग से CIA और राजस्थान सरकार का पिछले 25-30 साल से मैं समझता हूँ कि अच्छे संबंध रहे हैं। मैं भी बहुत प्रभावित हूँ। कल मैं गया था CIA के काउंसिल की मीटिंग के अंदर, तो मैं बहुत प्रभावित हुआ कि जिस प्रकार का माहौल मैंने देखा वहाँ, उन्हें जज्बा है काम करने का सरकार के साथ मिलने के। और ये भी एक शुरुआत हुई 91-92 के अंदर, जब डॉक्टर मनमोहन सिंह जी वित्त मंत्री थे नरसिंह राव जी के वक्त में। और जिस प्रकार से कोई जमाना था लाइसेंस, कोटा परमिट